Hello students, welcome to Super 7 revision series. This is the 9th video in which I am going to discuss numericals and problems based on genetics which are given in NCERT book. Question number 1. A diploid organism is heterozygous, means having two different alleles of a particular gene. So here a diploid organism is heterozygous for 4 loci. How many types of gametes can be produced? Answer is it will produce 16 different types of gametes. कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? This number is calculated by using simple formula 2 raised to the power n. And what is n here? It is the number of loci where the organism is showing heterozygous condition. और यहाँ पर 4 points हैं जहाँ पर organism heterozygous है. So it is 2 raised to the power 4 which is equal to 16. Example देखिए, point number 1. 4 genes दिखाए गए हैं and all are heterozygous. P, G, N and M all are heterozygous. So answer is 16. यहाँ पर 16 different types of gametes will be formed. Second देखिए, 4 genes है but out of 4, 3 are heterozygous. G, N and M are heterozygous while P is homozygous. So types of gametes formed will be 2 raised to the power 3. It is the 8. So that's how you can calculate the different types of gametes formed by organism. Question number 2. The pea plant, heterozygous for round seed shape means capital R small r and yellow seed color means capital Y small y were self-crossed. As a result, 1600 seeds collect किए गए and you have to calculate the number of seeds with both recessive traits means having small r and small y. First of all, write the genotype of the parents, capital R, capital Y, small y. इनको self cross किया गया. This is a simple dihybrid cross done by Mendel and ratio obtained was 9:3:3:1. So here you can see out of 16 only one seed is with both the recessive trait means having small r and small y. So from 1600 कितने होंगे seeds? देखिए, out of 1600 number of seeds with both the recessive trait will be 1600 को divide कीजिए 16 से, answer is 100. So there will be 100 seeds with both the recessive trait. Come to question number 3. Calculate the probability, यहाँ पर आपको percentage calculate करना है of obtaining a zygote with a given genotype. इस टाइप का हमें कितने zygote मिलेंगे ये हमें calculate करने हैं और क्रॉस किया गया है between the genotype जो दिए गए हैं. Okay. First of all, write the genotype of both the parents and then write the gametes formed. See फर्स्ट पेरेंट कितने टाइप के गेमेट्स बनेंगे? यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन ओनली 1 पॉइंट पर है. कैपिटल बी स्मॉल बी इज हेट्रोजाइगस, रेस्ट आर होमोजाइगस. सो यहाँ पर 2 टाइप्स के गेमेट्स बनेंगे. कैपिटल बी विल गो इन 1 गेमेट एंड स्मॉल बी विल गो इन द अदर गेमेट अलॉन्ग विद स्मॉल ए, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी. सेकेंड पेरेंट देखिए, ये होमोजाइगस है एट ऑल द 4 पॉइंट्स. सो ओनली 1 टाइप ऑफ गेमेट विल बी फॉर्म्ड. दिस इज कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी. Now make the Punnett square. फर्स्ट पेरेंट्स के जो गेमेट्स हैं वो टॉप पर लिखिए एंड सेकेंड पेरेंट के जो गेमेट्स हैं वो साइड पर लिखिए एंड देन मेक द कॉम्बिनेशन. यू कैन सी जो सेकेंड कॉम्बिनेशन है इट इज कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी एंड कैपिटल डी, स्मॉल डी. इट इज अ गिवन जीनोटाइप. ओके, सो कितना बने हैं, इनका नंबर कितना है? आउट ऑफ 2 देयर इज ओनली 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन जीनोटाइप इज 50%, means 1 out of 2. Question number 4. Using a Punnett square, आपको Punnett square बनाना है and work out the distribution of phenotypic feature. और phenotypic feature बताने हैं फर्स्ट जनरेशन में क्या होंगे. क्रॉस किसके बीच में किया गया है? बिटवीन homozygous recessive female. आप डायग्राम देख सकते हो. homozygous recessive female, यहाँ पर स्मॉल टी लिया गया है, ड्वार्फ प्लांट लिया गया है पी का. ओके, because this character is recessive. This is crossed with the heterozygous male. Heterozygous male का जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी. यहाँ पर जो प्लांट है पी प्लांट वो टॉल प्लांट है. ओके, क्रॉस किया गया है इन दोनों के बीच में. लेट अस सी हाउ द Punnett स्क्वायर विल शो. देखिए, गेमेट्स पहले बनाइए. मेल विल फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ गेमेट्स क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, एंड फीमेल विल फॉर्म ओनली 1 टाइप ऑफ गेमेट. देन मेक द Punnett स्क्वायर. Write the gametes formed by first parent on the top and second parent on the side
and make the combination. First plant कैसा होगा? Tall, capital T small t. Second plant will be dwarf. So phenotypic ratio क्या हुआ? Tall is to dwarf is 1:1. This is a test cross. I will define this test cross in the next question. Question number 5. A cross was carried out between a pea plant heterozygous for round and yellow seed, means capital R, capital Y, small y को क्रॉस किया गया है with a pea plant having wrinkled and green seed, means small r and small y. अब आपको A पॉइंट में दिखाना है show the cross in a Punnett square. First of all make the gametes. Okay, gametes फर्स्ट पेरेंट से कितने टाइप के बनेंगे? 4 टाइप के. कैपिटल R will go with capital Y as well as with small y. Small r will go with capital Y as well as small y. 4 gametes are formed from the first parent. Second parent will form only one type of gametes because it is homozygous, small r and small y. Now make the Punnett square. Write the gamete formed by first parent on the top and second parent on the side and make the combination. Question number B पढ़िए. Write the phenotype of progeny of the cross. देखिए क्या हमको combination मिला है. First is round and yellow having one capital R and one capital Y making round and yellow. Second देखिए round and green, one capital R but Y दोनों small हैं, so it is round and green. Third देखिए wrinkled and yellow, both R are small and one capital Y is there. Then wrinkled and green, small r and small y. So phenotypic ratio क्या हुआ? 1:1:1:1. All 4 types are in the ratio of 1:1:1:1. Okay, now what C question देखिए. What is the cross known as? It is called as the test cross. State the purpose of conducting the cross. It is used to determine the genotype of an individual with dominant phenotype. And with this we can find out the genotype of given individual when it is crossed with homozygous recessive. This is called as the test cross. Okay. See question number 6. 2 heterozygous parents are crossed. Okay. Heterozygous parents हैं 1 and 2, इनको cross किया गया है. If both the 2 loci are linked, I will tell you what is linked. What would be the distribution of phenotypic feature in F1 generation for a dihybrid cross? यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स लिए गए हैं, ग्रे एंड लॉन्ग. ओके, ग्रे का जीन है कैपिटल G स्मॉल g एंड लॉन्ग का जीन है कैपिटल L एंड स्मॉल l. एंड इसमें एक स्पेशल है फीचर कि दोनों जीन दे टेंड टू गो टुगेदर, दे आर लिंक्ड टुगेदर. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन. दोनों पेरेंट्स हैं 1 एंड 2, दोनों के जीनोटाइप लिखे हुए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए गेमिट्स कितने बनेंगे. फर्स्ट पेरेंट विल फॉर्म ओनली 2 टाइप्स ऑफ गेमिट्स क्योंकि ये लिंक्ड जीन्स हैं. कैपिटल G कैपिटल L विल गो टुगेदर एंड स्मॉल g स्मॉल l विल ऑलवेज गो टुगेदर क्योंकि ये लिंक्ड जीन्स हैं. तो फर्स्ट पेरेंट ने 2 टाइप के गेमिट बना दिया. सिमिलरली सेकेंड पेरेंट विल ऑल्सो फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ गेमिट्स C एंड D जो आपके सामने लिखा हुआ है. नाउ मेक द कॉम्बिनेशन. A can combine with C as well as with D. B can combine with C as well as D. As a result, 4 different type of organisms are formed. First 3 देखिए कैसे हैं वो, grey and long, having capital G and capital L. Okay, and last वाला देखिए fourth one, it is a black and dwarf, small g and small l. So ratio phenotypic ratio क्या मिला? Instead of 9:3:3:1, we are getting 3:1 ratio in a dihybrid cross where the genes are linked. So this is variation from the Mendel's law. Clear? Question number 7. A woman with blood group O married with a man AB group. Show the possible blood groups of the progeny and list the alleles involved in this inheritance. First of all, let me tell you, blood group is controlled by gene I with 3 alleles. 3 alleles हैं इसके, IA, IB and IO. So this is the example of multiple allelism. Clear? Now first of all let us see the genotype of man and woman. Woman is blood group O, so IO will be the genotype of the woman. Man is with the blood group AB, so genotype will be IA and IB. Here both these alleles can express themselves in the presence of each other, so they are codominants.
ये IA IB एक एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का भी। ओके, दोनों टाइप के एंटीजेंस इसमें प्रेजेंट होंगे। नाउ सी द गेमीट फॉर्मेशन। Man will form two different types of gametes, IA and IB. Women will form only one type of gamete. 3 and 4 देखिए दोनों एक जैसे हैं, IO and IO. One can combine with 3 as well as with 4. As a result, IAIO will form. Two can combine with 3 and 4. As a result, IB and IO will form. So progeny देखिए कैसा है, 50% of the progeny is with the blood group A and 50% of the progeny is with the blood group B. So that's how you can attempt the question related with the blood group. Question number 8. A color-blind father. Color blindness is a sex-linked recessive disorder. The gene for this is present on the X chromosome. Clear? A color-blind father has a daughter with normal vision. यहाँ पर देखिए जो रेड कलर का जो C है वो रिसेसिव लिया गया है एंड ब्लैक कलर से जो C लिखा गया है वो डोमिनेंट है। ओके, नाउ व्हाट इज डन, देखिए पहले सबसे पहले कलर ब्लाइंड फादर का जीनोटाइप देखिए क्या होगा, X विद द रेड C एंड Y, और नॉर्मल जो डॉटर है उसका जीनोटाइप क्या होगा, X विद द ब्लैक C एंड X विद द रेड C, कैरियर है ये डॉटर। ओके, नाउ शी मैरीज अ मैन विद अ नॉर्मल विजन, देखिए क्या होगा जीनोटाइप मैन का, X with a black C and Y. Okay, then you have to calculate what is the probability of her children to be color blind. Make the Punnett square. Write the genotype of gametes of first parent on the top and of the second parent on the side and make the combination. First देखिए कैसा होगा child, X black C, X black C. Okay, normal daughter है ये. Second is also a normal daughter but a carrier of the disease. X with the red C is also present here. Okay, but it is recessive so it cannot show it. Third देखिए X with the black C and Y normal son है and X with the red C and Y is a color blind son. So out of the 4 children there is only one child who is suffering from the color blindness. So probability क्या है, 25% probability of a children to be color blind. But अगर ये question होता what is the probability of her sons to be color blind? So out of 2 sons, 1 is color blind. So 50% probability होता sons का. Okay. So that's how you can attempt this type of question. Question number 9. Hemophilia is a sex-linked recessive disease. इसका पेडिग्री चार्ट आपके सामने बना हुआ है और आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उसका पार्ट 1 देखिए। आपको बताना है कि ये सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर क्यों है। It is sex linked because it has occurred only in the males. आप डायग्राम देख सकते हो, स्क्वायर जो बॉक्सेस हैं वो मेल्स को डिपिक्ट कर रहे हैं एंड जो डिजीज है वो स्क्वायर में दिखाई दे रहा है। इट मीन्स इट इज प्रेजेंट ओनली इन द मेल्स, सो इट इज सेक्स लिंक्ड। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है इसका पार्ट देखिए, कॉज्ड बाय रिसेसिव एलील। व्हाई इट इज रिसेसिव एलील, बिकॉज स्किप कर रही हैं जनरेशन 1 and 2, ये जो पेरेंट है इनका जो चाइल्ड है इज सफरिंग फ्रॉम द हीमोफीलिया बट they are normal. Okay, so skip कर रही है generation and normal parents are having diseased children, so it is a recessive trait. Question number 2 देखिए, write the possible genotype of individual 2. क्या होगा possible genotype, X capital H and X small h. Why? Because she is a carrier of the disease. Okay, because she is having a child suffering from the hemophilia, so she is a carrier. अब फिफ्थ का क्या होगा जीनोटाइप, क्योंकि ये मेल है और द मेल इज सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया, सो इट इज एक्स एच एंड वाई। जीनोटाइप इसका एक्स एच स्मॉल एच एंड वाई होगा। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन डू दिस। क्वेश्चन नंबर 10, अ कपल नॉट शोइंग सिकल सेल एनीमिया। कपल में सिकल सेल एनीमिया नहीं है, इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। यहाँ पर ए डोमिनेंट शो कर रहा है और एस रिसेसिव शो कर रहा है। Couple is not showing sickle cell anemia but having a child with sickle cell anemia. Work out cross, how it is possible and mention the probability of such inheritance. So first of all write the genotype of the parents, HbA and HbS दोनों का parents का होगा, carrier होंगे दोनों parents sickle cell anemia के लिए। Okay, gametes formation देखिए, both the parents will form 2 types of gametes, HbA and HbS. Okay, now make the Punnett square, write the gametes of the first parent on the top and second parent on the side and make the combination. First child देखिए कैसा होगा,
normal child with capital A, capital A. Okay. Second child देखिए is a carrier of the disease. Capital A and small s but normal है. Third child देखिए normal child है but the carrier of the disease A and S is there, and fourth child is having S and S. Okay. So here out of 4, 1 is having the sickle cell anemia. So probability of having sickle cell anemia is 25%. But one more important thing, how many are carrier? Out of 4, 2 are carriers. So probability of having sickle cell trait is 50%. So this type of question can come in your exam. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.